In today's class, I'm going to tell you how to use phrasal verbs. Okay, and phrasal verbs. Few verbs are given, then there are some particles like it may either be preposition or adverb or something like that, and they will have a completely new meaning. Okay, a verb has got a meaning, but when I add something like either a preposition or a particle, adverbial particles or something like that, the meaning completely changes. Like for example, I'm giving you one word, one phrasal verbs. Say for example, put up with. Put up with. What it means is, it means tolerate. Tolerate. Tolerate means bear with. Bear, bear with. With. Okay. You can say, I can't put up with such an insult. I cannot tolerate such an insult. I cannot bear with such an insult. The same meaning. If I tell you the meaning of this in Bengali, it will be আমি সহ্য না করতে পারা। I cannot put up with মানে সহ্য করা। I cannot put up with such an insult. এই ধরনের অপমান আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি এটাকে tolerate বলতে পারো। I cannot tolerate such an insult. তুমি আবার এটাকে ঘুরিয়ে বলতে পারো bear with. I cannot bear with such an insult. Understood? ये क्या है हिंदी में अगर बोल दूं सहना, मैं सहने का अर्थ हुआ टॉलरेट का मतलब सहना, बेयर विथ का मतलब सहना। आई कैनॉट बेयर विथ सच एन इंसल्ट, मैं ये अपमान सह नहीं पा रहा हूँ। आई कैनॉट टॉलरेट सच एन इंसल्ट, मैं ये अपमान सह नहीं पा रहा हूँ। आई कैनॉट पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, मैं ये अपमान सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. Number 2, phrasal verb number 2. If you see, like in phrasal verb number 2, I'm just going to give you this is a very important phrasal verbs, like put, same way, put up with. Again you are writing put up with. Okay, if you live with someone, you can say put up with. I put up with my uncle, UNCLE, uncle in Delhi. DELHI. I put up with my uncle in Delhi. If you put up with your uncle in Delhi, what does it mean? What it means is you live in Delhi with your uncle. Put up with means live. Live, live. Did you get it? तुम्हें यदि आप अगर put up with बोल रहे हो, इसका अर्थ हो गया live, रहना, किसी जगह में रहना। तो I put up with my uncle in Delhi मतलब मैं अपना चाचा के साथ दिल्ली में रहता हूँ। পুট আপ উইথ মানে বাস করা, এবং আই পুট আপ উইথ মাই আঙ্কেল ইন দিল্লি, আমি আমার কাকার সাথে দিল্লিতে বাস করি। इज दैट क्लियर? ये नंबर 2 हो गया। अभी चलिए नंबर 3 सीख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3। चलो नंबर 3 में एक नया कुछ सीख लेते हैं। अगर आप किसी विषय में बात करते हो तो आप ये बोलोगे फ्रेजल वर्ब टॉक ओवर, TAL के टॉक ओवर। किस विषय में बात किए, किस समय में, कौन सा विषय था? टॉक ओवर समथिंग। STH का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, एडवांस लर्नर डिक्शनरी अगर देखोगे इसमें है। तो इफ यू टॉक ओवर समथिंग, व्हाट इट मीन्स इज लाइक समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. You are saying, you are promising your friend that I'm going to talk over this matter. Understood? I'm going to talk over this matter in the evening when I'm free. As I am free now, I'm not free now, so I cannot talk about it. Is that clear? I get time in the evening, I'll talk over it in the evening with you. My dear friend, if you want to talk to me over this, you need to come in the evening. In the evening, I'm free, so I can have a talk with you. I can have a heart-to-heart talk with you. Is that clear? So, talk over something means, talk over means if you are talking over something, it means you are talking about something very important. Is that clear? Have I been able to make you understand very clearly? Got it now?
सो माय डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग इन हिंदी ऑल्सो. अगर आप किसी विषय में बात करोगे तो आपको टॉक ओवर बैठाना होगा. उसके बाद समथिंग का मतलब किसी विषय पर. मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स लो कि आप बहुत बहुत परेशान हो, तो यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन योर टीचर. सर यू हेल्प मी, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. अंडरस्टूड? सो आई यू कैन, व्हाट कैन यू डू? What can you do? You have to put an end to that problem you're facing. You're finding a difficult to solve that problem, right? So, what will you say? What will you say? Sir, you talk over this matter. You talk about you talk about my problem. You talk over. Let's talk over this thing. It's very important. चलिए इस विषय में बात किया जाए. ये बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखता है. ठीक है? It's very important for me. So please talk over this. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपका जीवन में कोई दोस्त आ गया, अच्छा फ्रेंड, आप वो दोस्त के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको पापा जी से आप बोल सकते हो, आई विल टॉक टू पापा, आई विल टॉक टू यू अबाउट हिम ओवर मील, खाने के टाइम में. ठीक है ना? ओवर लंच, लंच के टाइम में आपको बताऊंगा. तो किसी खाता हुआ किसी विषय पर अगर बात करोगे किसी समय पर, तो यू मस्ट से आई विल टॉक टू यू over lunch. I will talk to you over dinner. I will talk to you over breakfast. Maybe you people are take breakfast together. So you say to your dad that, Dad, I will talk to you about him over lunch. I will talk to you about him over dinner. Is that clear now? So over dinner means while taking dinner. Is that clear? तो आप किसी विषय पे अगर बात करोगे, ये मान लीजिए किसी समय पे बात कर रहे हो, खाने के टाइम में, चाहे लंच के टाइम में बात कर रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, I'll talk about my friend over dinner. I will talk about it over dinner. Is that clear? Got it now? I will talk about this problem. Understood? Over, I will talk this matter over when I get time. इसको सॉल्यूशन दे देना. Please talk this matter and finish it. Do you get it? Clear? अगर किसी কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে তুমি যদি কথা বলো, টক বলবে, I'll talk over this matter. Understood? In the evening. ঠিক আছে? আমি বিকেলবেলা এই ব্যাপারে কথা বলবো. I don't have time now. আমার এখন সময় নেই. I will talk over it in the evening. আবার কখনো কখনো যদি কোনো লাঞ্চ ফাঞ্চ খেতে গিয়ে খাওয়ার সময় যদি কোনো বিষয়ে আলোচনা করো, তো তুমি বলবে, I will talk to you about this over lunch. If you want to discuss something with your father, understood, during lunch, you can say, Father, I have something to tell you. I will tell you, I will talk to you over this. Understood? Over lunch. I will talk to you about it over lunch. আমি তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবো. I shall talk to you, ঠিক আছে, about it over lunch. While we are taking lunch. While taking lunch. Is that clear? समझ में आ गया ना? বুঝেছো? আমি লাঞ্চ খাওয়ার সময় তোমার সাথে এই ব্যাপারে কথা বলবো. I'll talk to you about it over lunch when we will be taking lunch. Is that clear? তাহলে আমি এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার সময় কথা বলবো. ঠিক আছে? তো নাম্বার 3, I hope you have understood. Yes. Okay. So I'm sure that you have understood. So let's learn number 4. मान लीजिए कोई व्यक्ति, if someone falls ill, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? He has fainted. ये उसका ज्ञान चला गया. तो उसको अगर आप ज्ञान अगर वापस आता है तो आपको बोलना होगा come round. ठीक है? तो you can say has the person come round? ওই লোকটা কি জ্ঞান ফিরেছে? has he come round? और around भी बोल सकते हो. ठीक है? You can say, ठीक है? और आप ऐसे भी बोल सकते हो. बहुत खूबसूरत अच्छा फ्रेजल वर्ब करने से आपको अच्छा लगेगा. चलिए हम एक करते हैं, काम अप विद. इसका मतलब प्रोड्यूस, किसी चीज को सृष्टि करना. ठीक है? come up with means find something. If you find something, find a solution to some problem. Okay? Clear? जैसे मेरा दोस्त एक नया बुद्धि लेकर, नया आइडिया लेकर आया. You can say my friend, FRIEND, my friend has
come up, my friend has come up with an idea about how to do that one. He has come up with an idea, he has produced an idea. Understood? He has got a solution to the problem. Is that clear? मेरा एक दोस्त मतलब किसी सृष्टि करना कोई चीज सोल्यूशन चाहे कुछ भी ढूंढ पाना, ठीक है ना? तो मेरा दोस्त एक नया আইডিয়া लेके आया, ঠিক है? আমার বন্ধু একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে এসেছে. My friend has come up with an idea. Is that clear? I have told you. Number 5, last but not the least, and the last one I think will be very good, and it is number 5. And number 5 is, what is number 5? You can say, if you are putting an end to the problem, understood? If you find solution to some problem, do you get it? Or if something comes to an end, understood? Something that comes to an end, and okay, and or you can say, no, we can use a very nice one, you know, if you are you give away. What do you mean? Pass away, understood? Or someone, if someone he passed away, means someone breathed his last. But I don't feel like telling you some phrasal verbs, though we have to learn sooner or later. It is very important for us to learn them. But when you put someone, understood, put pressure on someone to make him accept your idea, then you can say, convince someone to accept your idea. Okay, then you can get him round to something. Okay, or you can say very nice one. Let's learn a very nice one. Get into. Get into means, if you get into something, STH, you get into a problem. So you can say किसी समस्या में पड़ना, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे he has got into a difficult, difficult. He has got into a difficult trouble. He has got into a difficult trouble. और वो उससे निकल नहीं पा रहा है. He cannot get out of it. उसमें से वो निकल नहीं पा रहा. He has got into a trouble, difficult trouble. He has got into a trouble. Yeah, difficult trouble is always difficult. So my dear friends, no use. He has got into a trouble, ठीक है? He has got into a problem, understood? And he cannot get out of it. उससे निकल नहीं पा रहा है. डिफिकल्ट तो भाई है, ट्रबल तो डिफिकल्टी होता है ना. तो ये एक समस्या में बेचारा गिरा है, ठीक है? he has got himself into a, और उस खुद को एक प्रॉब्लम में लाया. ये और भी अच्छा रहेगा ना. he has got himself और भी अच्छा सुनाई दे रहा है नहीं बाबू? Right? He has got himself into a difficult trouble. He cannot get out of it. He came to me for solution to the problems. He wanted my help. Understood? If you have got yourself into a trouble, you must look for someone who can help you to put an end to the trouble, isn't it? If he cannot get out of it, he will ask for your help. Am I right or not? So, if he is your friend, he must ask for your help, and you will try. Understood? You will try to help him, isn't it? मान लीजिए कोई अगर आपका दोस्त वो खुद को एक समस्या में गिराता है, उसको खुद को एक प्रॉब्लम में घुसा देता है, खुद को एक प्रॉब्लम में जा पहुंचा, एक प्रॉब्लम में आ गया आपका दोस्त, वो उसमें से निकल नहीं पा रहा, तो आपको सहायता आपसे मांगेगा, आप हेल्प करने की कोशिश करोगे. तो एक समस्या में गिरना, टू गेट इनटू, अंडरस्टूड, समथिंग. इट मींस your friend has got himself into difficult trouble, and he cannot get out of it, and he is asking for your help. তোমার বন্ধু কোন একটা সমস্যা করেছে, তোমার কাছে সহযোগিতা চাইছে, কারণ সে বেরোতে পারছে না সমস্যা থেকে. he is asking for your help, তোমার সাহায্য চাইছে. he has got himself into trouble, নিজেকে সে একটা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে, and he cannot get out of it, সে এটা থেকে বেরোতে পারছে না. he is asking for your help, তোমার সে সাহায্য চাইছে. Okay, fine. If you have, my dear, if you have learned the 5 phrasal, do you think that 5 phrasal verb will be doing you good? Please learn them and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.